Hello everyone, welcome to iExamB and embrace the iExamB learning experience. Congratulations to all those who have cleared the IBPS SO Law Prelims examination and now you are ready to take on the mains examination. So the achievement you have had is an incredible one and you should be proud of your hard work and the dedication you have put in for your prelims preparation. Remember, आपको उतना ही मेहनत करना है, इनफैक्ट उससे ज्यादा करना है आपके मेंस की प्रिपरेशन के लिए so that you ultimately achieve your goal. For those who have not been able to clear this time, don't get disheartened, be focused, get yourself ready from your previous experience and prepare for the future exams. So आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ IBPS SO Law से रिलेटेड, उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड एक 10-day स्टडी प्लान एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, बिकॉज your journey is continuing ahead after the prelims result. What is main is your mains examination and you have to focus on clearing that. So we have just few days left in our hand, that is 10 days taking into consideration today itself. So you have to shift all your focus, devotion, time into your IBPS SO Law Mains examination preparation. And so for helping you out with your preparation time, this particular study plan I have come up with, the preparation strategy also is there which I have come up with so as to ensure that you are able to cover all the important laws and that too in a systematic manner, because आपको सिर्फ cover नहीं करना है, उस cover करने के लिए जो important laws हैं, subjects हैं, आपको एक systematic strategy चाहिए होगा, आपको balance करना होगा अपने studies को and that balance has to be along with the mock test. These play a very important role in your exam preparation. Okay, so mock test आपको attempt करने हैं as many as you can so that you get the hang of the exam in a better way. Now, before we move ahead with a further discussion, we'll be first looking on to the law syllabus. तो हमारा IBPS SO Law के mains examination का जो syllabus है, उसमें काफी law के subjects हैं. Okay, so क्योंकि banking sector है तो banking related laws होंगे ही and you have to study the RBI Act, Banking Regulation Act, NI Act and so on, other banking related laws. Then we have law of contracts, wherein you have contract act, sale of goods, specific relief, these you have to study. Corporate law, securities law, से भी a few questions have come up in the previous years. So Companies Act, IBC, SERA, Depository, SEBI Act, ये सारे आपके important है. Further आपका जो law का syllabus है उसमें आपका constitutional law है जिसमें Indian constitution है, civil and criminal laws है, IPC, CPC, CRPC, evidence, torts. अब यहाँ पे आपका confusion या question होगा कि which criminal law we should focus on, the previous one, the IPC, CPC, CRPC or the new criminal laws which have come into effect. So I would suggest over here कि आप जो प्रीवियस आपका क्रिमिनल लॉज है उससे आप वेल वर्स्ड हैं ही, करेक्ट, यू नो देम वेरी वेल बिकॉज दैट इज अगेन अ कॉमन सब्जेक्ट एंड कॉमन सब्जेक्ट फॉर मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव लॉ एग्जाम्स. आपको क्या करना है कि जो भी न्यू क्रिमिनल लॉज है उसको एक कंपैरेटिव वे में आप पढ़ सकते हो. कंपैरिजन शीट अगर आपके पास है तो कंपैरिजन शीट के बेसिस पे पढ़ सकते हो क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं, उस पे आपको फोकस करना है. देन देयर आर पार्टनरशिप लॉज, देन लीगल थ्योरी है, इसमें आपका जूरिस्प्रूडेंस, legal maxims and all they come. Then we have the other laws and acts which again consist of arbitration, consumer protection, competition act, prevention of money laundering act, all these are there. Okay, so RTI act is also there which are very important from the एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो ये आपका IBPS SO लॉ का जो मेंस का सिलेबस है वो हो गया. अब इसको जो हमें प्रिपेयर करना है इसके लिए आपका जो 10 डे का शेड्यूल होगा स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, एज आई मेंशन दैट इज 4th of December. ठीक है, सो 4th of December से लेके 13th of December तक आपका जो टाइम पीरियड है बहुत ही क्रूशियल है. ओके, ईच डे यू हैव टू डिवोट इन अ वेरी systematic manner so that you are well prepared before the 14th of December. So 4th of December, 5th of December, you can see I have added certain law topic subjects over here. Like 4th of December आज है, आप RBI Act, RDB Act, then Banking Ombudsman, Bankers Book Evidence Act, ये सब छोटे छोटे हैं, आज आप इनसे स्टार्ट कर सकते हो अपने प्रिपरेशन को. देन Banking Regulation Act, very important negotiable instrument also, बैंकिंग सेक्टर है तो आप 5th दिसंबर को करोगे. अब आप एक और चीज देखो कि ये जो आपका शेड्यूल है 4th to 13th of December का, यहाँ पे ये सारे लॉ के टॉपिक सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, बट इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था
कि मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आप सिर्फ पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे, डोंट थिंक दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड। I would suggest that apart from your studies, your revision, what is very important is your mock test. तो आप कोशिश करो हर एक दिन आप कम से कम एक mock test करोगे, तो by the end of your 10 day you will be done with 10 mock test. अगर आपने 12 mock test at least कर लिया तो आपको एक good command आ जाता है, hand आ जाता है एग्जाम का, and you are having a good confidence in that particular situation. So आप accordingly दे सकते हो 6th of December में Companies Act RTI Act है, क्योंकि vast है Companies Act, okay, so उसके लिए थोड़ा अच्छे से आप टाइम दे सकोगे, डिवोट करोगे, same with Constitution, and accordingly 13th of December तक आपका सारा लॉ का सब्जेक्ट्स कवर हो जाएगा, अदर लॉज एंड एक्ट अब आप कर सकते हो, ठीक है, एंड इसके साथ साथ आपका मॉक टेस्ट भी करोगे। ये स्टडी प्लान जो है आप इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, एंड यू कैन यूज इट, यू कैन मॉडिफाई एज पर योर प्रिपरेशन लेवल एंड ऑल, ओके, एंड देन यू हैव द 14th of December which is your exam. Now each of these days I have added various law subjects that are covering a mix of say big and small topics or a little more sector specific like banking related laws पे पहले focus किया है हमने. Accordingly a mix of all these have been kept into view, and then आपका वो जो 10 day का schedule बना है for the preparation. What is important in these 10 days is that you need to execute the plan in a very effective manner, okay, and उस effective implementation के लिए I can tell you that we are having at iExamB, we have a course which is packed with valuable resources, okay, that will actually help you effectively execute your plan as I already mentioned. So अब आप जब पढ़ने वाले हो तो 10 दिन में आपको सारे सब्जेक्ट्स लॉ के जो कि काफी वास्ट है उसको पढ़ना है, ठीक है, बट दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू प्लानिंग दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स टू स्टडी. व्हाट इज रिक्वायर्ड अगेन इज द स्ट्रैटेजी. सो अगर आपके पास समरी नोट्स है, खुद के नोट्स आपने बनाए हैं समरी फॉर्म में, then you can use them, or as I mentioned, we at iExamB, we have an IBPS SO Law Mains examination course जिसमें कि आपको समरी नोट्स प्रोवाइडेड है सारे सब्जेक्ट्स के, ऑलमोस्ट जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और इस समरी नोट से आपको क्या फायदा होगा कि आपका जो भी सेक्शंस है उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, that is in a very crisp manner provided in these summary sheets. तो उस सेक्शन समरी शीट को आप क्विकली अपने जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिकैप्चुलेट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो by using these. So these summary sheets are quick and thorough revision tool, you can say. Then there are MCQ booklets. These MCQ booklets are very hand-on practice. अब ये जो questions आपके होते हैं MCQ booklet में, they actually give you, as I mentioned, a very hand-on practice, ठीक है, और सारे important aspects को इस booklets में cover किया गया है with the questions you are having in the start of the document, and then you have in the later portion the answers where you can cross verify how well you are able to answer these questions. Then moving on to the very important thing is the mock टेस्ट, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला है मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैंने एक वीडियो भी इस पे लाया था, अगर आपने मिस आउट कर दिया उसको देखना तो जरूर देखिए लीगल वी चैनल पे, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. किस लिए? स्टिमुलेट करता है हमारे रियल एग्जाम इन्वायरमेंट को, और वो स्टिमुलेट करने की वजह से क्या होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बूस्ट हो जाता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो iExamB का जो IBPS SO Mains का ऑनलाइन कोर्स है इसमें आपको मॉक टेस्ट भी है, दैट will give you the stimulation and confidence for your examination. So say if you are looking for a one-stop solution or you want to enhance your preparation, then you can rely on our course because it is exactly what you need at this particular time. So you can enroll yourself at the earliest if you want and access all these features to give you an extra edge. So remember that the clock has started ticking and the countdown has begun, and this is your time. This is your time to shine. Remember that. And so for that, you have to stick to the plan. You have to be consistent and you have to also believe in yourself. वो बहुत जरूरी है. The belief has to be there. The confidence has to be there. So good luck for your preparation. Wishing you all the very best. And if you have any questions, any queries, any doubt, you can approach to us because we are there to support you at every step of your preparation. Okay, do remember to subscribe to the channel and press on the bell icon. Thank you and all the best.